Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, we are going to use the domain decomposition method to solve the first order partial differential equations. In previous lecture, we used this ADM method for the solution of ordinary differential equations, but here in this lecture, which is a bit new topic, so the topic of today's lecture is we want to use this a domain decomposition method to solve the partial differential equation. So the partial differential equation in this case is inhomogeneous, and we are going to solve this inhomogeneous partial differential equations by a domain decomposition method, and the example which I have considered here is on this slide. You can see here that this is first order partial differential equations. This is one partial equations, and the second one is the second partial differential equations, and they are inhomogeneous. By inhomogeneous we mean that the hand side of the partial differential equation is non-zero, and here we have some source terms in the partial differential equations, and these are the initial boundary condition for the above partial differential equations, in which we have two unknowns. One is the u and the second unknown is v, and u is depending on x and t, and similarly the second unknown v is also depending on the variable x and t, and the initial boundary condition are also given in this case for these partial differential equations. Now the first step for the domain decomposition method, that we need to rewrite these partial differential equations in operator form. So here one operator is partial by partiality, and the second operator is partial by partial x, and this operator is LT, and this operator is LX. So we need to write these partial differential equations in operator form, and the operator form of these equations is this form: LTU plus LXV is equal to G1, LTV plus LXU is equal to G2. This is the operator form of the partial differential equation. The next step was to, if we have these linear operator LT and LX, so we assume that these operator are invertible, means that the inverse of these operator exist. LT is equal to L inverse T is equal to the integral of any unknown function with respect to t, and L inverse x is the invertible operator for Lx, and which is equal to the integral of the unknown function dx. So these are the linear invertible operator for the above linear operator. Now once we apply these invertible operator on
these equations L inverse, this is t, L inverse t, L inverse x. So we just apply one invertible operator on both the partial differential equation, and that invertible operator is LT in this case. So you can see here, जब आप इस पे इन्वर्स ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो ये आपके पास u बन जाता है. दिस इज u which is depending on xt and is equal to uh, f of x, f of 1x plus L inverse t on the source term minus L inverse on Lxv, and the second equations can be written. V is the function of t, x and t is equal to the second function f2 of x, the inverse operator on the source term g, and the inverse operator of t on the Lxu. So हमने क्या किया, हमने ये L इनवर्स ऑफ t जो है ये दोनों इक्वेशंस पे अप्लाई किया, इक्वेशन 1 पे और इक्वेशन 2 पे. फर्दर ये जो इंडिविजुअल अननोन फंक्शंस है, एडोमियन हमें ये कहता है कि थर्ड स्टेप एडोमियन डिकम्पोजिशन मेथड का ये है कि ये जो unknown individual functions है, we are going to replace this individual functions by series of function. और दोनों के लिए हम जो सीरीज डिफाइन कर रहे हैं that is exactly this one. For u of xt the series is this one, summation n from 0 to infinity un of xt, and for v of xt the series is equal to summation n from 0 to infinity vn of xt, where n start from 0 to infinity. So replace the above differential equations by this summation form. तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशंस समेशन में ये आएगा, that will be exactly the summation form or the series form of the above differential equation, partial differential equation, और ये जो है this will be the series form of the second partial differential equations. और ये partial differential equations linear in nature है, इसमें कोई नॉन लीनियरिटी नहीं है. ठीक है. सो अब यहाँ पे once we expand this series तो ये u naught से शुरू होता है, and the answer of u naught is exactly this one. This is u naught, and further terms can be found by from this series. The next slide में, if you look at the next slide, the zeroth order solution of the first order partial differential equations of the first equation is this one. U naught of xt is equal to the function f1 plus the invertible operator with respect to t on the source term. और बाकी जो है आपके पास रिकर्सिव रिलेशन आता है, मतलब बाकी जितने भी टर्म्स आप लोग फाइंड कर रहे हो वो इस फार्मूला से फाइंड होंगे. दैट फार्मूला इज कॉल्ड द recursive formula for the remaining term of the unknown functions. तो once you put k is equal to 0 तो ये आपके पास u1 आ जाएगा, and for u1 we need v naught, और v naught आपके पास ये है, this is exactly v naught, the zeroth order solution for the second equations which is linear in nature. और फिर ये जो है this is the recursive form for the second equations, और उसमें ये है कि when k is equal to 0 तो ये v1 आ जाएगा. For v1 you need u0, और u0 आपके पास ये है, इसको आप इंटीग्रेट करें
तो आपके पास जब इंटीग्रेट होगा तो उसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होगी, ठीक है। और फिर उसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटीग्रेट करें तो आपके पास इसकी वैल्यूज आएगी। सो दिस इज द जनरल फॉर्म फॉर the partial differential equations, that how we can solve any linear partial differential equations by using the Atomic decomposition method. यहाँ पे बुक में भी एक एग्जांपल गिवन है. इफ यू लुक एट दिस एग्जांपल, partial u by partial x plus partial u by partial y is equal to some function, and these are the initial boundary condition. यहाँ पे जो अननोन फंक्शंस है वो एक्स और वाई पे डिपेंड कर रहे हैं. प्रीवियस एग्जांपल में जो अननोन फंक्शंस थे दे वर डिपेंडिंग ऑन एक्स एंड टी. तो पहला स्टेप क्या है कि इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को आप क्या लिखें, इसको लीनियर फॉर्म में लिखें. तो दिस इज द लीनियर फॉर्म और द ऑपरेटर फॉर्म ऑफ द अबाउट डिफरेंशियल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस. और यहाँ पे एल एक्स जो है वो ये है and Ly has this value, and further we assume that these linear operators are invertible, so their invertible form is exactly this one. For x is the above one, and for y we have these invertible operators. अब यहाँ पे जिस तरह पहले एग्जांपल में हमने क्या किया, लीनियर ऑपरेटर विद रिस्पेक्ट टू टी, उसका जो इन्वर्टेबल ऑपरेटर है उसको इक्वेशंस के दोनों साइड पे अप्लाई किया. तो यहाँ पे हम ये ऑपरेटर इक्वेशंस के दोनों साइड पे क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं. सो एल एक्स इनवर्स इंटू एल एक्स ऑफ यू इज इक्वल टू यू. तो आपके पास जो अबाव इक्वेशंस है इन्वर्टेबल फॉर्म जब आप अप्लाई करते हैं तो वो इस फॉर्म में आ जाता है. एंड फर्दर you have, after applying the invertible operator, the partial linear differential equations can be reduced in this form. और फिर थर्ड स्टेप क्या था कि इंडिविजुअल लीनियर ऑपरेटर को क्या करना है, उसको हमने सीरीज में रिप्लेस करना है. तो रिप्लेस दिस इंडिविजुअल अननोन फंक्शंस बाय अ सीरीज ऑफ फंक्शन. So we have the final form for the above partial differential equations after using the steps of all steps of the Atomic decomposition method. तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाता है, ठीक है. और इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं जब सीरीज को एक्सपेंड करें, ठीक है. सो यू नॉट का आपके पास ये सोल्यूशन आता है, दिस इज एग्जैक्टली यू नॉट, और यू वन, यू टू एंड यू थ्री, इन टर्म्स के सोल्यूशंस कहाँ से आएंगे, यहाँ से आएंगे. इस टर्म से आपके पास इससे सोल्यूशन आएंगे. सो दिस इज एग्जैक्टली द value of u naught, or the solution of first order partial differential equations, and this is the recursive form for all other terms of ui's. So for if you want to calculate this u1, so for u1 you need u0, and u0 आपके पास ये है, and the process going on. For u2 you need u1, and for u3 you need u4. So in general, to calculate any next value we need the value of a previous term. So this is exactly now the final form of the that partial differential equations using the Atomic decomposition method, and these are the ordered solution of the that above partial differential equations. u naught आपके पास ये आ रहा है, u1 आपके पास ये आ रहा है, u2 आपके पास ये आ रहा है, and u3 आपके पास ये आ रहा है. So these are the solutions for the above linear partial differential equations. तो
एडीएम मेथड जो है, एडोमेन डिकम्पोजिशन मेथड, can be applied to solve any linear partial differential equations as well as ordered differential equations. So ये थोड़े से आप लोग इस बुक के जो पेजेस है ये पढ़ लें और इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें एंड देन अप्लाई दिस एडीएम मेथड टू एनी linear or ordered differential equations, और आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड दीज आर द स्टेप्स, आप इसको देख सकते हैं, दीज आर द स्टेप्स फॉर द domain decomposition method, that how you can apply this method by solving any uh, linear partial differential equations। तो इसको आप लोग पढ़ लें, ये बार बार हम डिस्कस कर चुके हैं, मेरे ख्याल में दोबारा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। एंड अगर फिर भी आप लोगों को इसमें प्रॉब्लम रहा तो देन यू कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम मी। और इस बुक में एक एग्जांपल भी है, एग्जैक्टली इसी तरह सॉल्व हुआ है जिस तरह अभी हमने बाकी जो एग्जांपल सॉल्व किए, तो इसको भी कोशिश करें कि आप लोग इसको सॉल्व करें, ठीक है, बाय यूजिंग द डोमेन डिकम्पोजिशन मेथड। इट इज़ वेरी मच इजी, ठीक है, एंड ट्राई टू सॉल्व ऑल दीज थिंग्स। और ये बुक, लेकिन ये बुक आपके पास होना चाहिए, और मैं इस बुक का लिंक भी शेयर कर रहा हूँ। और अगर आप इसको, आपके पास गूगल आप एक्सेस कर सकते हैं, तो यू कैन डाउनलोड दिस बुक फ्रॉम गूगल एज वेल, इट इज़ अवेलेबल ऑन गूगल फ्रीली, ठीक है। थैंक यू।